Hello, hello, hello. So, hi, good evening, everybody. Once again, this is Bishwajit Datta, Director, Success Ed Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. A very small, short passage in front of you that would help you out to understand the various aspects of reasoning, various aspects of English as well at the same time. But then I have made this on critical reasoning actually. Sometimes you will not find too much of difference in English and critical reasoning. If you keep on moving with an understanding that the language part is going to be easy, believe me, it's easy. And so long will you keep that understanding that critical reasoning is tough, it is going to be tough. So the only way you can change your mind is to understand that in both of these part, in English part particularly, you can go to the passage and figure out the answer. But in critical reasoning, you cannot figure out the answer unless you understand the dialogue, I mean the argument, I mean the course of action that is happening in that particular passage. All right. So try to keep this understanding first, and then believe me, things are going to be easy. So right in front of you, a critical reasoning passage, which you just have to go for it in the next 5 minutes. I'm giving you 2 minutes to read this passage. I'm just out of the screen so that you can read this passage properly, and then we can go for the questions one by one. And if you want me to go for the reading, I can do that. India has invested in industrial projects, dams, roads, mines, power plants, and new cities to achieve rapid economic growth. Available reports indicate that more than 21 million people are internally displaced population due to development projects in India. Now, this is basically the main line of the problem, that main line of the argument, or you can say the main line of the passage, that we are basically going to talk about people who are millions in numbers. If you can quantify them, they are millions in number, and are internally displaced population due to development projects in India. Although the tribal population only makes up to 8% of the total population. I mean, out of those 20 million people who are displaced, they are called the internally displaced population. The total population is 21 million people, and out of that, 8% of them are tribal population. All right. So although the tribal population only makes up 8% of the total population, more than 40% of the development induced displaced are tribal people in India. I mean, whatever the total number of development induced people, development induced displaced people, out of that total, 40% of them are the tribal people. The difficulties faced by IDPs means internally displaced populations. The difficulties faced by IDPs are numerous but distinct. Their right to participate in contest in the political process is difficult. Such consequences lead to the requirement of legislation that address not only the issue of compensation but also of resettlement, rehabilitation, and participation in negotiation. See, when you read this particular passage, you get the concrete idea about the argument, what the author is talking about. Author is specifically talking that India has invested industrial projects, dams, roads, mines, power plants, and new cities to achieve rapid economic growth. That's the thing. We need to have this economic growth, and for that we are displacing people. We have so far displaced 21 million people. 21 million people, and out of them, 8% of the people are tribal people. And then the total set of the people who are displaced, if I categorize them, I have one category of development induced displaced people. Whatever the development induced displaced people that we have,
आउट ऑफ दैट सैंपल स्पेस 40% ऑफ देम आर ट्राइबल पीपल. मतलब डेवलपमेंट के कारण ट्राइबल पीपल का स्थानांतरण बहुत ज्यादा हुआ है. राइट, 21 मिलियन पीपल में 8% ट्राइबल है, दैट यू कुड सी, विच इज नॉट वेरी ह्यूज. बट ट्राइबल पॉपुलेशन भी तो देश में कम है ना. बट वी नीड टू स्टिक टू the problem. That means if I talk about 21 people, the 10% of the people is out of 21, the 10% of the people is 2.1 million. So approximately you can say around 2 million people of tribal population has displaced in total. And that 2 million people that have displaced, the tribal population, whatever the number of the displaced population due to development induced, they are 40% of the total population displaced because of development induced population. उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई है. उनमें से कुछ समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, मे बी दे आर नॉट एबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस एंड सो ऑन, they are not able to give properly their votes and so on. So that means because of this transportation, I mean this development, all the people who have migrated from one place to another, they have displaced from one place to another, they are not able to give the better possibilities of negotiations. इनका प्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में, इनका प्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में. भाई डिस्प्लेस्ड हो गए, प्रॉब्लम्स है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे. इनडायरेक्ट मीनिंग है यहाँ पर. इंड्यूस्ड क्या हो सकते हैं, इम्प्लाइड क्या हो सकता है, दैट ट्राइबल पॉपुलेशन का पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में इनका पार्टिसिपेशन कम है. दे डोंट हैव प्रॉपरली, दे हैव द प्रॉपर प्रेजेंटेशंस एंड सो ऑन. ठीक है ना. एंड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस दिस लीड टू लेजिस्लेशन दैट एड्रेस नॉट ओनली द इश्यूज ऑफ कॉम्पेंसेशन. अब इस तरह के प्रॉब्लम्स है कि इनको डिस्प्लेस किया तो कॉम्पेंसेशन दीजिए, इनको फिर से सेटल करिए, रिहैबिटेशन प्रोसेस में इनको आगे करिए, पार्टिसिपेशन एंड नेगोशिएशंस एंड सो ऑन. तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम्स डेवलपमेंट के कारण नहीं है. ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेवलपमेंट के कारण, उसके कारण है. डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. यू कैनॉट सर्वाइव अनलेस यू हैव डेवलपमेंट. बट व्हेन यू डू डेवलपमेंट्स यू नीड टू डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. That displacement process or the reason of displacement is creating a lot of problems to these people. Means not only the people in the tribal area are affected because of this development, but the people in the normal people, not the tribal one alone, but the other people are also affected because of this development. So now come to the question 1. Choose the most appropriate title for the above passage. तो आ सकता है यार, मतलब CR में भी तो आ सकता है, इंग्लिश में तो आता ही आता है. I give a suitable passage to it. Not only that, you may also have a suitable title to the critical reasoning as well. So impact of development of public life, एक प्रकार से तो लगता है impact of development of public life, because in this particular passage you don't find that the impact has actually been done only in the tribal people, but it has also impacted normal people as well, other people as well. But मुद्दा ये नहीं था. मुद्दा ये था कि डेवलपमेंट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण प्रॉब्लम जो जनरेट हो रही है, दैट मीन्स यू आर जनरेटिंग सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड दैट टू बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उनके बारे में बात चल रही है. So it is not the impact of development on public life. See, you have not discussed any impact of development on the public life. Impact of development on public life can go to endless, in an endless manner, because when you do developments it can go in a positive manner as well. That we have not discussed in the passage. तो पहला हो नहीं सकता है. Tribals and development देखने पर लगता है, but tribals and development, the whole passage is not for the tribal people. The whole passage is not about the development of the tribal people as well, but the passage is about the displacement of tribal people because of the development. तो ये भी नहीं हो सकता. Dichotomy between rights and development, या ये हो सकता. और लास्ट है ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. सी which are the drivers of economic growth in India? मतलब रोड बनाना, इस तरह के डेवलपमेंट्स करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इंडस्ट्रीज सेटल करना. आर वी basically talking about the drivers of economic growth in India?
यदि ऐसा होता तो वी वुड हैव टेकन इनफैक्ट एवरी sectors of the economic portfolio that would help us to grow further. So the whole passage is not also putting the stress on this, but I would say we are basically talking about dichotomy between rights and development. See, we know that development is required. हमको चाहिए, okay? हम उसको बंद नहीं कर सकते. यदि हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए होता, we could have stopped it, but we need it. But when we start doing for the development, we find that we need to displace people. So as we displace people, the rights are getting hampered, right? So there are two things that are happening, and these two things are contrast. मेरे को दुखी हो रहा है लोगों को डिस्प्लेस करके, पर मेरे को डेवलपमेंट चाहिए. Now these two are two different contrast situations, ideas. मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, need to grow the country. I'm happy to grow the country, but when I do that, I have lot many people getting displaced. Their rights are getting hampered. Displacement करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है. I know to make my country grow further, to bring development, I need to displace the people. But the problem is their rights are getting hampered, encroached. To get their rights back into their life, doing lot of things to be done. बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है. प्रेजेंटेशन नहीं है इनका सिस्टम में, प्रेजेंटेशन नहीं है अथॉरिटी में, प्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में. टू ब्रिंग देयर प्रेजेंटेशन इनटू द गवर्नमेंट, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, taking lot of legislation work to be done. So that is the problem. Okay, so therefore this is dichotomy between rights and development. Dichotomy तब होता है when you give two opposite ideas or two opposite notions, two opposite things that goes in contrast. ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बात चल रही है. What is the attitude of the author towards the development projects in India? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर ऑथर का एटीट्यूड क्या है? ऑथर क्या नहीं चाहता? ऑथर चाहता है. तो एबॉरेंट तो हो नहीं सकता, क्यों डिसलाइक कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता. डिस्टेस्टफुल है भाई, डिसग्रेसफुल है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं चाह रहा है, ऐसा भी नहीं है. ऑथर चाहता है. जॉयस, उसको मजा आ रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है पूरे तरीके से. क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के जो राइट्स हैम्पर्ड हो रहे हैं उसके कारण व्हाट इज हैपनिंग, इज बॉदरिंग अबाउट देयर राइट्स. उसको बहुत खुशी नहीं मिल रही, बट ही इज अनईजी, परेशान है. तो मैं ये तो कर रहा हूं, एक तरफ मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, दूसरी तरफ मेरे लोग परेशान हो रहे हैं. तो अनईजीनेस है उसके अंदर, एक छटपटाहट है उसके अंदर. वो इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. उसकी उस फीलिंग जो है वो छटपटाने वाली जो फीलिंग है, अनईजी, ही इज कंफ्यूज्ड. कंफ्यूज का मतलब ये नहीं कि वो काम को लेकर कंफ्यूज्ड है, मतलब अंदर से वो खुश नहीं है, इज नॉट एट ईज. छटपटाहट है उसके अंदर. सो द ऑथर इज एट ईज. सो देयरफॉर द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can be inferred from the passage? Inference निकालना है. You need to bring something that could be inferred from the passage. Look at the line. India has heavily, significantly in infrastructure development. ये तो है, लग रहा है, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं कि हम रोड डेवलप कर रहे हैं, हम सिटीज डेवलप कर रहे हैं, हम सब चीजों को डेवलप कर रहे हैं. इंडिया वांट्स टू टेक ओवर यूएस. दिस इज अननेसेसरी, अनवांटेड, किसी भी यूएस से लेना देना नहीं है. इंडिया विशेस टू गेट ए लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डैम प्रोजेक्ट. ऐसा हमने कोई स्पेसिफिक बात नहीं करी है दैट वी आर डेवलपिंग ऑल दोज एवेन्यूज जस्ट टू ब्रिंग लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट in the development of dams and so on. We haven't discussed that. The government of India is acting against the interest of Indian citizens. ऐसा थोड़ी ना किया है. डेवलपमेंट कभी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट में हो सकता है क्या? दुनिया में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, आई मीन डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड, इज नॉट एट ऑल अगेंस्ट दी पीपल. लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है. आपके रोड अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी, लोग अपने माल को बेच पाएंगे. यू आर एबल टू कनेक्ट विथ द मेन स्ट्रीम areas, you are able to come with the mainland and so on. You are able to integrate with the whole world and so on. So therefore, against many years. So the only possible option that we thought from the very beginning could be my answer is option number A. That is, India has heavily, significantly in infrastructure development. That's my answer. Come to the next question. Which of the following rights of tribals has not been covered by the legislation in question? Payment of compensation. आप याद करो, compensation की बात हुई है, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पूछा है. क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर एजुकेशन, इसकी बात शायद नहीं हुई है. रिहेबिलिटेशन, इसकी भी बात हुई है. रीसेटलमेंट, इसकी भी बात हुई है. रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पेंसेशन की बात हुई है. एजुकेशन की बात नहीं है. वी कैन गो टू द पैसेज वंस अगेन.
देखिए रीसेटलमेंट की बात हुई, रिहैबिलिटेशन की बात हुई है, कॉम्पेंसेशन की भी बात हुई है, बट वी हैवंट टॉक्ड अबाउट एजुकेशन in the passage. So therefore my answer right now would be option number B, that is creating avenues for education of children. Then what are the tribals considered most vulnerable? Why are the tribal considered most vulnerable? A segment of IDPs. Internally displaced population में ये ट्राइबल को सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों माना है? Because they are illiterate, because their social integration is minimal, both A and B, neither A nor B. देखो भाई, यदि आप एजुकेटेड हो आप इंटीग्रेट कर सकते हो. If you know English, you can go to America, you can go to China, you can go to any country and you are able to have a life. I mean, you can work, you can earn, you can have your life. Number one, एजुकेशन होने से हम इंटीग्रेट हो सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं लोगों के साथ में. नंबर वन. और सोशल इंटीग्रेशन में भाषा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यदि दोनों चीज मिसिंग हो जाए तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता. तो ये जो लोग हैं बेसिकली जो ट्राइबल पीपल है, दे बेसिकली लिव इन फॉरेस्ट्स, सो दे डू नॉट हैव एजुकेशन, पढ़े लिखे होते नहीं, तो वो अपने ही जगहों पर रहते हैं. अब आप वहां से उनको निकालोगे तो कैसे वो बाहर आके बसेंगे? बिकॉज दे आर नॉट able to integrate themselves with the mainstream areas or with the mainland. They are not educated properly, they do not know the language and so on. So that is the reason why they are called as very vulnerable population. So in that case I would go for option number A and B both. That means option number C is the right answer. कि वो illiterate है भाई, हम illiterate होते वैसे हम vulnerable हो जाते because we do not know our rights. आप यदि illiterate हो, आपको अपने rights नहीं पता. जब आपको अपने राइट्स नहीं पता तो आप लड़ नहीं सकते. जब लड़ नहीं सकते यू कैनॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, यू कैनॉट गो टू द कोर्ट. आपको वो हवा लगेगा. आज भी लोग बैंक में जाके खाता खुलाने से डरते हैं. तो थिंक अबाउट द सिचुएशन, व्हाट दे वुड थिंक व्हेन दे गो फॉर पुलिस स्टेशन और व्हेन दे गो फॉर अ कोर्ट. इट इज रियली इम्पॉसिबल, इजंट इट? सो दे आर इलिटरेट, सो दे आर वल्नरेबल. ठीक है, उनका कोई मिसयूज करके उनसे फायदा ले सकता है. और सेकेंड, सोशल इंटीग्रेशन में इनका जो परसेंटेज है, इनका जो तरीका बहुत मिनिमल है. दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर वेरी मिनिमल, व्हाई दे हैव वेरी मिनिमल इंटीग्रेशन विद द पॉपुलेशन. क्योंकि लैंग्वेज नहीं, बाहर नहीं आते, जंगलों में ही रहते. सो देयरफॉर दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कंट्री. सो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा वल्नरेबल कहा गया आईडीपी से. पढ़े लिखे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर यदि आप विस्थापित करोगे तो भी वो अपना कामकाज चला लेंगे, लेकिन इन लोगों को करोगे तो कैसे होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड हैव द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ IDPS. So this is all that we have today for these sections. Hope you like these questions. These are the similar type of questions that we conduct in our class through the mock test papers. As I usually say that mock test papers are the passport for the college. When you write an entrance examination, your passport is the quality questions that you solve, because they are the ultimate reason for your success in the examinations. So if you would like to do for similar kind of question papers, join Success at Education Services. For all those students who are going to write for CLAT 2023, you have 30 mock test papers. If you wish to do them, just one call away, you will get those mock test papers just in 5 seconds. And the people who are in 2024, aspirants, the new batch is opening soon. Inquire for the batch. You'll be getting a demo class as well. Go for it. Try to figure it out. Are we capable enough to help you out in your accomplishment of your dream? If yes, then we have a great journey together for the next year. Thank you so much. May God bless you. See you next time. Bye-bye.